Hello everyone. Today we look at the chapter Electricity from the class 10th science book. So let's study. Electricity has an important place in the modern society. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries, and so on. What constitutes electricity? How does it flow in an electric circuit? What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? In this chapter, we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of electricity and its application. So in this chapter, what will we look at? हम कुछ चीजें देखेंगे कि what is electricity, how does it flow in a circuit, कौन कौन से factors हैं, which factors control the flow of electricity or the flow of current. We should also see what is an electric circuit and what are the components of an electric circuit. तो हम ये सब चीजें इस chapter में पढ़ेंगे. So moving on, let's start with the first topic, electric current and circuit. We are familiar with air current and water current. We know that flowing water constitutes water current in rivers. Similarly, if the electric charge flows through a conductor, for example, through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. In a torch, we know that the cells or a battery, when placed in proper order, provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow. We have also seen that the torch gives light only when it switches on. What does the switch do? So let's learn what has been said so far. You are familiar with air currents and water currents. हम लोगों ने देखे हैं air currents और water currents क्या होते हैं. So what happens is air circulates up and down depending on the pressure and temperature. Same goes with water. So if you heat a water and if you heat a water in a jar, what happens is the water at the bottom gets heated and it becomes less dense and it moves to the top, and the cold water from the top moves down to the bottom. So this is called a convection current. And you must have already studied convection currents in social studies or science in your previous classes. So these are called convection currents. Similarly, like the water flows in water currents, the electricity or the current flows um, in a conductor or in a wire. So how does it do that? First of all, there's a switch. In our houses we all have switches. हमारे सबके घर में एक एक switch होता है. जब हम उसको on करते हैं, when we switch it on, the appliance starts working. अब वो switch कुछ भी हो सकता है. It can be of a fan, it can be of a microwave, it can be of a TV. तो जब आप switch on करते हैं तो आपका appliance चल पड़ता है. Similarly, अगर आपके पास torch होगी आपके मोबाइल में या बैटरी वाली टॉर्च, आप उसको अगर ऑन करेंगे तो वो टॉर्च ऑन हो जाती है. सो व्हाट इज द स्विच टू? इट हेल्प्स अस कंप्लीट द सर्किट. सर्किट क्या होता है? कोई भी कंडक्टिंग वायर अगर एक क्लोज्ड लूप में हो तो उसको सर्किट बोलते हैं, और उसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्विच को ऑन करना पड़ता है. सो लेट्स स्टडी व्हाट डज द स्विच डू. अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब. तो अगर आपका एक कंडक्टर है, उसमें एक बल्ब है, तो और बीच में एक स्विच है, तो अगर आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये पूरे लिंक को जोड़ देगा. एंड दैट इज व्हाट अ स्विच डज. जब आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो ये पूरे सर्किट को कंप्लीट कर देता है. एंड दिस क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट. अगर आपका वायर कहीं से टूटा होगा, दैट मीन्स द सर्किट इज इनकम्प्लीट और ओपन, तो आपके करंट को पाथ नहीं मिलेगा फ्लो करने के लिए. सो व्हाट डज अ स्विच डू? इट मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक between the cell and the bulb. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. तो जो भी पाथ होगा एक सर्किट का, अगर वो क्लोज्ड है और कंटिन्यूअस है तो हम उसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. Now, if the circuit is broken anywhere or if the switch of the torch is turned off, the current stops flowing and the bulb does not glow. तो अगर आप स्विच को ऑन कर देते हैं कहीं से, सॉरी स्विच को ऑफ कर देते हैं कहीं से, तो क्या होता है? करंट फ्लो करना बंद हो जाता है. वाई? बिकॉज आपका सर्किट अब इनकम्प्लीट हो गया है या ओपन हो गया है.
तो उस केस में आपका जो भी अप्लायंस होगा, टॉर्च, टीवी, फैन, माइक्रोवेव, वो बंद हो जाएगा। तो आप घर में भी जब आप स्विच ऑफ करते हो तो आप एसेंशियली क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, यू ब्रेक द सर्किट। आप सर्किट को ओपन कर देते हैं एंड द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड दैट्स व्हाई द अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग। Okay, let's move on. How do we express electric current? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in a unit time. In other words, it is the rate of flow of electric charges. तो किसी भी वायर में, लेट्स से ये आपकी वायर है और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, मतलब आपने उस वायर को बीच में से काटा है, तो इस पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, कितना चार्ज फ्लो होगा, दैट इज योर करंट। In circuits using metallic wires, electrons constitute the flow of charges. However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was observed. तो यूजुअली क्या होता है, करंट हम कैसे बताते हैं फ्लो हो रहा है, करंट तब फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। When electrons flow from one terminal to other terminal और from one end to other end, तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जब करंट की डिस्कवरी हुई थी या जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी, तब तक हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था। So electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. तो हम बता नहीं पाए थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो हो रही है। So the electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of the electric current. So what happened initially was that you have two terminals or you have, let's say, two ends, और मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि मान लो यहाँ पे चार्ज है +20 और यहाँ पे चार्ज है +10, ठीक है। तो हमने देखा था कि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा था। सो वी अज्यूम दैट जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और जहाँ पे लेसर पॉजिटिव चार्ज है, तो हायर चार्ज से लोअर चार्ज में करंट फ्लो हो रहा है, एंड वी अज्यूम दैट इज बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हियर टू हियर। बट एक्चुअली क्या था कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा था, and that flow of charge जो कि electrons थे, that resulted in the flow of current. So actually the flow of current is not the flow of positive charge, it is the flow of negative charge. Okay, so electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of the electric current. Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons which are negative charges. तो जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, एक्चुअली हायर से लोअर, लोअर से हायर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अब हम कन्वेंशन हमने हमने एक कन्वेंशन बना दिया, वी मेड अ रूल दैट द फ्लो ऑफ करंट is not the same as the flow of positive charge. The flow of current is the opposite of flow of negative charge. अब बात समझ रहे हैं, इट्स द ऑपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। ओके, so let's move on. If a net charge q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equals to q upon t. So what does this mean? हमने ये पहले भी अभी बात की थी कि किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर से अगर t टाइम में कुछ चार्ज फ्लो होगा q, तो उसका करंट क्या हो जाएगा, q बाय टी, राइट। मान लीजिए आपका ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें 10 सेकेंड्स में मान लीजिए 20 कुलम्स चार्ज फ्लो हुआ। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलम्स, ठीक है। तो 10 सेकेंड्स में 20 कुलम्स चार्ज फ्लो हुआ, तो आपका करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 2। ओके, सो दिस इज योर करंट। हम ऑल्टरनेटिवली ये भी बोल सकते हैं कि करंट वो चार्ज होता है जितना चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन में एक सेकंड में फ्लो करे, राइट। तो यहाँ पे 10 सेकंड्स में 20 कूलम्स फ्लो कर रहा था, तो एक सेकंड में कितना फ्लो कर रहा था, 2। सो द चार्ज दैट फ्लोज इन 1 सेकंड through a cross section of conductor is called current, or the amount of charge that flows through a conductor, a cross section of a conductor, and the time taken by that flow of charge, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा,
right? So the SI unit of charge is coulomb, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power of 18 electrons. तो वन ये जो कूलम है, what is 1 coulomb equals to? It is equal to the charge of 6 into 10 to the power of 18 electrons. Okay, how do we calculate what is a coulomb? तो हमें पता है कि 1 electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the power of 19 coulombs. तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है that is 1.6 into 10 to the power of minus 19. Okay, and we are saying that हमें चार्ज देखना है 6 into 10 to the power of 18 इलेक्ट्रॉन्स का. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो 6 into 10 to the power of 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? If you multiply these both, you will get 1 unit coulomb. तो 6 into 10 to the power of 18 इलेक्ट्रॉन्स का जितना भी चार्ज होगा that is 1 coulomb. Okay, the electric current is expressed by the unit called ampere. तो यहाँ पे करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर. चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम. एंड टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड्स. ओके, एंड दिस इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मारी एम्पियर. 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. That is 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर 1 coulomb चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो हम कह देते हैं कि 1 ampere करंट फ्लो हो रहा है. ओके, small quantities of current are expressed in milliamperes, which is 10 to the power of minus 3 amperes, or microamperes, which is 10 to the power of minus 6 amperes. Okay, so how do you measure current? आप current नापते कैसे हैं? So a current, an instrument called ammeter measures electric current in a circuit. It is always connected in series in a circuit. तो इसका मतलब क्या हुआ? This is your instrument which is called an ammeter. और ये सीरीज में लगता है. मतलब जिस लाइन में आपका बल्ब है, की है, बैटरी है, उसी लाइन में आपका अमीटर लगेगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड दैट इट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज. इसका मतलब ये सीरीज में कनेक्टेड है. ओके, थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड. और इसके थ्रू करंट मेजर होता है. फिगर 11.1 shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising of a cell. इसमें दिस इज योर सेल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, एन अमीटर, दिस इज योर अमीटर, and a plug key. This is your plug key. Note that the electric current flows in the circuit from positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter. तो इसमें करंट की डायरेक्शन हमें हमें क्या देखने को मिल रही है? That it is in this direction. So it is coming out of the positive terminal and moving along the circuit and then coming back into the negative terminal. Okay, and what did we study would be the direction of electrons or the flow of electrons? It would be from the negative terminal to the positive terminal in the opposite direction of the current. Okay, तो करंट की डायरेक्शन की बिल्कुल ऑपोजिट हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. एंड हियर एंड ऑलवेज द फ्लो ऑफ द करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. Okay, let's move on. So let's see an exercise question here. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. तो हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है? We are given current which is 0.5 ampere. What else are we given? We are given the time which is 10 minutes. And what do we have to find? We have to find the charge Q. Okay. तो हमारा फॉर्मूला क्या था करंट का? I is equals to Q upon T. ओके, तो Q क्या हो जाएगा हमारा? Q is equals to I into T. I हमारा कितना है? 0.5 एम्पियर और टाइम कितना हो जाएगा? 10 मिनट्स. लेकिन मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 10 into 60 seconds which is 600 seconds. और आपका करंट है 0.5. सो what would this lead to? 0.5 into 600 which is 300 coulombs. Okay, do not forget to mention the units. It's very important.
तो इस तरीके से आप चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन हियर. व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? वी जस्ट स्टडीड that a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. Okay, एक कोई भी कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, define the unit of current. So what is the unit of current? The electric current is expressed by a unit called ampere. So what's the unit of current? It's ampere. For smaller units you can use milliampere or microampere. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. तो हमें ये भी दिया है 1 coulomb of charge कितने इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ 1 coulomb of charge? 6 into 10 to the power of 18. आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? You can easily calculate it on your own. You know that 1 electrons charge is 1.6 into 10 to the power of minus 19. Okay, तो अब आपको ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 coulomb चार्ज बनाते हैं. तो आप क्या कर सकते हो? सीधे 1 से 1.6 into 10 to the power of minus 19 को डिवाइड कर सकते हो. ओके, and this will give you the number of electrons that are required to constitute 1 coulomb of charge, which is 6 into 10 to the power of 18 electrons. Okay, let's move on. The next topic that we're going to look at is electric potential and potential difference. What makes the electric charge to flow? तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सर्किट में फ्लो क्यों करता है? लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. Charges do not flow in in a copper wire by themselves, just as water in a perfectly horizontal tube does not flow. If one end of the tube is connected to a tank of water kept at a higher level, such that there is a pressure difference between the two ends of the tube, the water flows out of the other end of the tube. यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है? यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है कि मान लो हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आप एक पानी की ट्यूब लो और आप इसको बिल्कुल सीधे रखो तो क्या होता है कि इसमें से द वाटर विल नॉट फ्लो इन एनी डायरेक्शन इफ इट इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल. लेकिन अब आप इस ट्यूब को ऐसे लो, एक टैंक से कनेक्ट कर दो, ठीक है, सच दैट दिस एंड इज हायर एंड दिस एंड इज लोअर. तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी ऊपर से नीचे फ्लो करेगा. ओके, For flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity has of course no role to play. तो जैसे पानी में हमारी ग्रेविटी काम कर रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए हमारी ग्रेविटी काम नहीं करती. The electrons move only if there is a difference in electric pressure, called the potential difference. तो जैसे यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से प्रेशर में डिफरेंस था, ओके, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बिल्डअप हुई थी एंड दैट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर फ्लोइंग. तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए, या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक प्रेशर. तो अगर आपके दो टर्मिनल्स हैं या दो एंड्स हैं किसी भी बैटरी के, तो उसमें एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा, और इन दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा उसकी वजह से आपके सर्किट में करंट का फ्लो होगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. This difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. तो ये potential difference कैसे create होता है? एक बैटरी की वजह से, जिसमें एक सेल, दो सेल, तीन सेल कुछ भी हो सकते हैं. जैसे आपके रिमोट में या टॉर्च में यूजुअली दो सेल्स पड़ते हैं. The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminals of the cell, even when no current is drawn from it. तो इसमें क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो केमिकल एक्शन होता है उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है सेल्स के दोनों टर्मिनल्स के बीच में. जो दोनों एंड्स होते हैं सेल्स के, उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू केमिकल एक्शन. व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस इन मोशन. When the cell is connected to a conducting circuit element,
the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. तो जब हम इस सेल को when we connect it to a circuit element, एक सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से the charges are set in motion, मतलब चार्जेस फ्लो होना शुरू कर देते हैं, and this creates an electric current. Remember that electric current is actually the motion of negative charge or the flow of negative charge. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. ताकि चार्ज फ्लो होता रहे किसी भी कंडक्टर में, उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? एनर्जी चाहिए. कौन सी? केमिकल एनर्जी, जो कि सेल के अंदर होती है. तो ये खर्च होती है. दिस इज स्पेंड and only then does the flow of electrons happen. We define the potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to other. तो मान लीजिए आपके ये दो पॉइंट्स हैं जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ. अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करने के लिए कितना वर्क डन किया, उससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता लगता है. We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move the unit charge from one point to another. The potential difference V between 2 points is equals to work done upon the amount of charge carried. तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक यूनिट चार्ज कैरी करने के लिए कितनी एनर्जी लगाते हैं या कितना वर्क डन करते हैं, उससे पता लगेगा कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. And the SI unit of potential difference is volts, which is V, and this is named after Alessandro Volta, an Italian physicist. 1 volt is the potential difference between 2 points in a circuit in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. तो मान लीजिए आपको 1 point से another point 1 coulomb चार्ज मूव करना है, और इसको मूव करने के लिए अगर आपने 1 जूल ऑफ वर्क किया, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट. वाई? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ? 1 जूल का, एंड द चार्ज इज मूव्ड 1 कूलम. तो 1/1 is 1 volt. So 1 volt of potential difference, how is it defined? The amount of work done, which is 1 joule, to move a unit charge, that is one unit of coulomb, 1 coulomb, results in the potential difference of 1 volt. So this is explained here. Therefore, 1 volt is equals to 1 joule upon 1 coulomb, and 1 volt is equals to 1 joule per coulomb. The potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter. The voltmeter is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. तो हमने पहले एक टर्म पढ़ी थी connected in series अमीटर के लिए, लेकिन वोल्ट मीटर के लिए हम क्या देख रहे हैं? इट्स कनेक्टेड इन पैरेलल. तो अगर आपका कोई भी सर्किट है, और अगर आपका सर्किट के अंदर या सर्किट के थ्रू एंड थ्रू कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है, तो उसको हम सीरीज में बोलते हैं. लेकिन अगर आप एक अलग से वायर निकाल के किसी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं, if you connect it in a parallel path, then it's called a parallel connection. Or voltmeter is always connected in parallel, and an ammeter is always connected in series. Just for your convenience, if you want to see what is an ammeter and what's a voltmeter, so this is how a voltmeter looks like. You attach your wires in the red and the black knobs that you see here, and the uh, needle is used to see what is the potential difference in a circuit. Similarly, if you want to see what does an ammeter look like, this is an ammeter. In this again, you have two knobs, a black and a red one, and the needle is used to calculate the potential difference of, sorry, the current flowing in a circuit. Okay, so these were your ammeters and voltmeters. Voltmeter is always connected in parallel, and ammeter is always connected in series. So moving on, let's do a question here. How much work is done in moving a charge of 2 coulombs across 2 points having a potential difference of 12 volt? तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V, which is 12 volts. हमें कितना चार्ज मूव हुआ बिटवीन 2 पॉइंट्स वो दिया है, Q is equals to 2 coulombs, एंड हमें क्या ढूंढना है? वर्क डन. तो हमें W ढूंढना है. हमारा फॉर्मूला क्या था? V is equals to W upon Q.
सो हाउ कैन वी कैलकुलेट W इज इक्वल्स टू V इंटू Q. यहाँ पे V हमें दिया है 12 एंड हमें Q दिया है 2. So what would be the work done here? 12 into 2, which is 24 joules. Okay. So this is a fairly simple question, and your answer is 24 joules. Okay. So now let's do these questions. Name a device that helps to maintain the potential difference across a conductor. So this is again a battery which might have multiple cells. What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? That means that if you do 1 joule of work to move 1 coulomb of charge from one point to another, you have a potential difference of 1 volt. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery? So we have to calculate here that how much energy is given or work is done when 1 coulomb charge passes through a 6-volt battery. तो यहाँ पे हमारा चार्ज कितना है 1 coulomb, हमारा potential difference कितना है 6 volts. So work done would be potential difference into charge, which is 1 into 6, sorry, 6 into 1, which is 6 joules. Okay, so fairly simple. Let's move on. So now let's study what is a circuit diagram and what are the components that are used to represent a circuit. We know that an electric circuit, as shown in figure 11.1, comprises a cell, a plug, and electric components and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conveniently used. Conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in the table. तो हम ये symbols क्यों use करते हैं? क्योंकि so that it is readable by everyone across the globe. आप कहीं भी दुनिया पे हो और अगर आप अपना बैटरी ऐसे बनाओगे तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि ये एक सेल है. Okay, so that's why these common symbols are used everywhere to make an electric circuit. तो एक electric circuit में what all components can you see? An electric cell. You can see a battery or a combination of cells, a key or a plug which can be on or off. अगर एक switch on है, it will look like this, और अगर एक switch off है, it will look like this. It's similar to your switches in home. वो on और off हो सकते हैं. A plug, a wire joint. तो अगर दो wires use कर रहे हैं और दोनों joint हैं, तो उनका joint कैसे दिखाते हैं? With a dark dot. Then if there are two wires which are not joining but passing over or under each other, तो उसको कैसे दिखाते हैं? एक हल्का सा सेमी सर्कल बना के ऊपर से ये वायर you can take it out. Okay, then you have an electric bulb which is shown like this or this. You have a resistor or of resistance R which is shown like this. You have a variable resistance or a rheostat which is shown like this. तो ऊपर वाला क्या था? Fixed. It will have a fixed value और नीचे वाला क्या है? It will have a variable value which you can change over the course of time. A meter we have already seen, it looks like this, and a voltmeter looks like with a circle and a V in the center. Okay, so next, the important concept that we are going to study is Ohm's law. Is there a relationship between the potential difference across a conductor and the current through it? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने potential difference पढ़ा which is in volts, और हमने current पढ़ा which is in amperes. अब potential difference और current के बीच में कोई relationship होती है क्या? Does change in potential difference change the current in a circuit or not? Let us explore with an activity. तो हम एक activity से इसको explore करते हैं. So what you can do is you can set up a circuit as shown in figure 11.2 consisting of a nichrome wire XY. यहाँ पे एक wire है XY of length 0.5 meters and a meter, a voltmeter, 4 cells of 1.5 volt each. यहाँ पे आपको 4 cells मिल जाएंगे 1.5 volts के. Nichrome is an alloy of nickel, chromium, manganese and iron metals. तो अब इसमें हमें क्या करना है? First, use only one cell as the source in the circuit. Note the reading in the ammeter I for the current and the reading of the voltmeter V for the potential difference across the nichrome wire XY in the circuit. Tabulate them in the table below. तो पहले आप क्या करोगे? आप सिर्फ और सिर्फ एक सेल यूज करोगे. What you do is you just use a single cell here and you perform this experiment
and you calculate the current which is shown in the ammeter and the voltage which is shown, or the potential difference which is shown in the voltmeter. Next, what you do is you connect two cells in the circuit. Note the respective readings of the ammeter and the voltmeter for the values of current through the nichrome wire and the potential difference across the nichrome wire. Then you connect two batteries or two cells, and then again you read the readings in the respective instruments ammeter and voltmeter for current and potential difference. Repeat the above steps using three cells and then four cells in the circuit separately. तो आप सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स करोगे थ्री सेल्स और फोर सेल्स यूज करके. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड राइट. यहाँ पे जब आपने यहाँ से कनेक्ट किया इसको, देन दिस बिकम्स योर सर्किट एंड योर सर्किट हैज ओनली वन सेल. नेक्स्ट टाइम जब आपने यहाँ से कनेक्ट किया, then this becomes your circuit and it has two cells. Similarly, you can connect with three cells and four cells. Okay. Then what you do is you calculate the ratio of V to I for each pair of potential difference V and current I. तो आपकी V की रीडिंग्स आ गई हैं और आपकी करंट की रीडिंग्स आ गई हैं. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो कि आप V और I को डिवाइड कर सकते हो to calculate the ratio of V to I. Okay, so this is your current and this is your potential difference. Then what you do is जो भी आपकी रीडिंग आएगी for different values of I and V, you plot a graph for it. और हमें और जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? You will find that approximately the same value of V to I is obtained for each case. तो आप जितना V बढ़ाओगे उतना ही I बढ़ेगा और वो रेशियो ऑलमोस्ट सेम रहेगा. This thus VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph. तो यहाँ पे हमें VI ग्राफ देखने को मिलता है which is a straight line graph and it passes through the origin. Okay. Thus V is to I is a constant ratio. तो क्योंकि हमारा V is to I approximately same value देता है तो हम इसको constant मान लेते हैं यानी कि it's almost always fixed for a given wire. A German physicist, George Simon Ohm, found out the relationship between the current flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal. The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. तो हमारी जो potential difference है across the ends of a metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. Directly proportional मतलब आप जितना गुना वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ही गुना आपका करंट बढ़ेगा. By how many ever times you increase your voltage? 2 times, 3 times, 4 times. By similar times will your current increase 2 times, 3 times or 4 times or whatever. Provided its temperature remains same. Okay, so this is the condition कि आपकी वायर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए. This is called the Ohm's law. And this is a very important law. What is the Ohm's law? This is the Ohm's law. The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided that the temperature remains the same. Okay. So here what we see that V is directly proportional to I और V upon I is constant. मतलब ये रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो हम कांस्टेंट को ना एक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं R. Okay, so to remove the proportionality we use a constant which is called R and we write our formula as V is equals to I into R, and R here is the resistance. R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and it's called the resistance. Resistance जैसे कि एक English term है which means that um, it is a hurdle in the flow of current charges. Okay, so any hurdle that is presented by the wire is actually the resistance of the wire. Okay, आप जब सड़क पे चलते हैं और जैसे this is your road and this is your car. Now you can't just zip through the road. आप एकदम चल के नहीं जा सकते. यहाँ पे बीच में कारें होती हैं, right? People are walking, ट्रैक्टर चल रहे होते हैं, बुलक कार्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, right? तो आपको कहीं बीच बीच में से निकल के जाना होता है, right? So you have to find a way and all the things in the way are your resistance. They offer you a resistance. Okay, they are hurdles. Similarly, एक wire में when an electron flows, there are molecules of the wire itself and they cause hurdles.
Okay, so the electron has to find a way to flow through it, and the molecules or the atoms of the wire, they offer resistance, ठीक है, जिसकी जो कि एक रुकावट है to the flow of electric charge. Okay, so it is the property of the conductor to resist the flow of charges through it. Okay, तो जो कंडक्टर होता है वो चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है, एंड दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. The SI unit of resistance is ohm, represented by the Greek letter. So this is the Greek letter how you represent ohm. According to Ohm's law, R, which is constant, is the ratio of V by I. If the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. तो अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है, तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ohm. Okay, and this is represented in this way mathematically. Also from equation 11.5 we get I is equals to V by R. तो हमारी इक्वेशंस क्या बनी? V is equals to IR, R is equals to V by I, and I is equals to V by R. Okay, all the three equations are actually the same derived from here. It is obvious from equation 11.7 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जितना हाई होगा करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी, राइट? अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 रहेगा और मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज 100 है, तो 100/10 इज द करंट वैल्यू इज 10 एम्पियर. अगर वोल्टेज 100 है और रेजिस्टेंस 50 है, बढ़ा दिया मैंने, 100/50 इज 2 एम्पियर. तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट कम होगा. सो दिस इज कॉल्ड एन इनवर्स रिलेशन. ओके, सो initially when we were looking at V and I, we were saying that they are directly proportional. This is inversely proportional. Current through a resistor is inversely proportional to its resistance. If the resistance is doubled, the current is halved. अगर resistance double होगा तो current आधा हो जाएगा. In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. A component used to regulate the current without changing the voltage source is called a variable resistance. तो कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी भी सर्किट में वो करंट चेंज करना होता है अपने नीड के मुताबिक, लेकिन अगर हम करंट चेंज करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम वोल्टेज ही चेंज करें. व्हाट वी कैन आल्सो डू इज वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस, एंड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज we can do this by a variable resistance in a circuit. In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance of a circuit. तो एक variable resistance को हम क्या कहते हैं? Rheostat. And this is used to change the resistance in a circuit, and this will also help us change the current. We will now study about the electrical resistance of a conductor with the help of the following activity. तो हम resistance के बारे में और पढ़ते हैं. So let's take a nichrome wire, a torch bulb, a 10-watt bulb, an ammeter which has a range of 0 to 5 ampere. मैंने अभी आपको ammeter दिखाया था जिसकी range 0 to 5 ही थी. A plug key and some connecting wires. Set up the circuit by connecting 4 dry cells of 1.5 volt, each in series with the ammeter, leaving a gap XY in the circuit as shown in figure 11.4. तो हम पहले क्या करते हैं कि ऐसा एक सर्किट बनाते हैं जिसमें 4 सेल्स हैं, एक अमीटर है, एक की है, और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, और बीच में एक XY गैप है. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कहते हैं? वी कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द निक्रोम वायर in the gap XY. Plug the key, note down the ammeter reading, take out the key from the plug. Note, always take out the key from the plug after measuring the current through the circuit. तो पहले हम क्या करते हैं, हम निक्रोम वायर लगाते हैं XY की जगह और हम अमीटर से करंट नापते हैं. उसके बाद हम की को निकाल देते हैं so that we can again replace nichrome wire by something else. But when you do this, always remember to switch off your circuit or remove the key, right? नहीं तो आपको करंट लग सकता है. Okay. Next, what do? We replace the nichrome wire with a torch bulb in the circuit and find the current through it by measuring the reading on the ammeter. Now repeat the above step with the 10-watt bulb in the gap XY. तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने निक्रोम वायर ली, उससे आपने करंट कैलकुलेट किया, फिर आपने टॉर्च बल्ब लगाया और फिर आपने उसकी जगह 10-watt बल्ब लगाया, एंड देन in each of the three cases you measure the current. Are the ammeter readings different for different components connected in the gap XY?
What do the observations indicate? You may repeat the activity by keeping any material component in the gap. Observe the ammeter readings in each case. Analyze the observations. तो हमें एनालाइज क्या करना है कि तीनों केस में क्या करंट की रीडिंग्स सेम थी या अमीटर रीडिंग सेम थी या नहीं. तो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व or what will you observe is that in this activity we observe that the current is different for different components. अलग अलग components के लिए current अलग है. Why is this? Certain components offer easy path for the flow of electric current while others resist the flow. कुछ components easy path allow करते हैं, मतलब कम resistance allow करते हैं, कम रुकावट allow करते हैं, and other other components, what do? They offer more resistance. We know that motion of electrons in an electric circuit constitutes the electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. So, like I was telling you earlier, कि electrons का movement हमारा current बनाता है, but electrons are not free to move in a conductor. उनको रुकावट है. They are restrained by the attraction of atoms among which they move. तो जो कंडक्टर के एटम्स वगैरह होते हैं, they are actually restrained by them. Okay, वो रुकावट पैदा करते हैं to the flow of electrons. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor. तो एक component जो कि लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो गुड कंडक्टर कहलाता है. अ गुड कंडक्टर इज वन व्हिच हैज लो रेजिस्टेंस और व्हिच इजीली अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट. A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. A component of identical size that offers higher resistance is a poor conductor. An insulator of the same size offers even higher resistance. तो जैसे आपकी कॉपर वायर हो गई या एल्यूमिनियम वायर हो गई, ऑल दिस मेटालिक वायर्स आर गुड कंडक्टर्स. बट जैसे कि आपका ग्लास हो गया या कोई भी नॉन मेटालिक component हो गया, those are poor conductors of electricity, right? So what are the factors on which resistance of a conductor depends? Resistance किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? हमें कैसे पता लगेगा कि resistance um, would be higher if we do this, yeah, it would be lower if we do this. So let's find it out by an activity. Complete an electric circuit consisting of a cell, an ammeter, a nichrome wire of length L. Let's say it's marked with 1, a plug key as shown in figure 11.5. तो हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं. इसमें एक सेल है, एक अमीटर है, एक की है और एक निक्रोम वायर है which is actually marked by 1. Okay, now plug the key, note the current in the ammeter, replace the nichrome wire by another nichrome wire of the same thickness but twice the length, that is 2L, marked by 2 in the figure. तो हम इस वाली निक्रोम वायर को निकाल देते हैं and we replace it by this nichrome wire which is twice the length of the nichrome wire called 1. Okay, so we replace it by the second nichrome wire. Now we note the ammeter reading. Now what do? We replace the wire by a thicker nichrome wire of the same length L. A thicker wire has a larger cross sectional area. Again note down the current through the circuit. तो इस बार हम क्या कहते हैं कि we take a third wire which is of the same length as the first wire but its thickness is more. ये थोड़ी ज्यादा मोटी है पहली वायर से. Okay, again we switch on the circuit and we read the ammeter for current reading. Now instead of taking a nichrome wire in the fourth condition, what do? We connect it with a copper wire in the circuit. Let the wire be of the same length and same cross sectional area as that of the first nichrome wire. Note the value of the current. इस केस में हम मटेरियल ही चेंज करते हैं, निक्रोम की जगह कॉपर लेते हैं, हम लेंथ और थिकनेस सेम रखते हैं. ओके, एंड देन वी मेजर द ammeter reading. Notice the difference in the current in all the cases. Does the current depend on the length of the conductor? Does the current depend on the cross section of the wire used? तो हमें यहाँ पे ये पता करना है या ये ऑब्जर्व करना है कि जब हमने लेंथ चेंज की निक्रोम वायर की 2L कर दी L से, तो क्या करंट की रीडिंग चेंज हुई. और हमने जब कंडक्टर की थिकनेस चेंज कर दी, ठीक है, हमने थर्ड केस में ज्यादा थिक वाला निक्रोम वायर लिया था, व्हेन वी टुक अ थिकर निक्रोम वायर, देन डिड द करंट रीडिंग चेंज और नॉट? दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व और फाइंड आउट. सो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड? It is observed that the ammeter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is doubled. मतलब आपका करंट आधा हो गया. अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 मतलब आपका करंट आधा हो गया. तो मान लीजिए पहले 6 एम्पियर फ्लो कर रहा था तो अब सिर्फ 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है. कब?
जब आपने निक्रोम वायर की लेंथ डबल कर दी। ओके, व्हाई इज दैट? बिकॉज लेट्स से आप एक रोड पे चल रहे हो, ठीक है, और आपको 1 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो आपको कुछ रेजिस्टेंस होगी रास्ते में, कुछ गाड़ियां होंगी, लेकिन मान लीजिए अब आपको 2 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो 2 किलोमीटर में आपकी रुकावटें डबल हो जाएंगी। ओके, योर रेजिस्टेंस इज डबल। ओके, सो वी वी स्टडीड दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेजिस्टेंस। हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट आधा हो जाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाई सिंस वी डबल द लेंथ ऑफ द वायर, what has this done? It has doubled the resistance, and that's why your current has become one half of its value. Okay, the ammeter reading is increased when a thicker wire of the same material and same length is used in the circuit. जब आप थिकर वायर यूज करते हो तो अमीटर रीडिंग बढ़ जाती है, ओके, या फिर करंट इंक्रीज हो जाता है। व्हाई इज दैट? लेट्स टेक अ सेम एग्जांपल, लेट्स से दिस इज योर रोड एंड ये 2 लेन रोड है, ठीक है, तो आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपको कुछ रुकावटें हैं, ठीक है, रास्ते में, लेकिन अगर मैं इसी रोड को 4 लेन कर दूंगा तो आपको आपकी रुकावटें कम हो जाएंगी, आपको ज्यादा गैप्स मिल जाएंगे जाने के लिए, राइट? तो जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाते हो कंडक्टर की, वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा, विच इज योर अमीटर रीडिंग विल इंक्रीज, right? A change in the ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and same cross section is used. अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे ना, जैसे निक्रोम से हमने कॉपर कॉपर कर दिया, तो क्या होगा? तो भी हमारी अमीटर रीडिंग चेंज होगी। व्हाई? बिकॉज करंट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ओके, current depends on the material of the conductor. It also depends on the length of the conductor. It also depends on the thickness of the conductor और cross section area. इसको हम cross section area भी बोल सकते हैं। So these are the three things on which a conductor's resistance depends or a conductor's current would depend. In applying Ohm's law, we observe that the resistance of the conductor depends on length of the conductor, its area of cross section, and the nature of its material. Right. So these are the three things that we talked about. Precise measurements have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross section. तो हमने ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशन से ये पता किया है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब जैसे जैसे एल या लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जिस प्रोपोर्शन में लेंथ बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर आपकी लेंथ डबल हो गई तो आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। सिमिलरली योर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होगा, और जिस रेशियो में एरिया बढ़ेगा उसी रेशियो में रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर आपका एरिया डबल हो जाता है तो आपका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, राइट? सो इफ यू कंबाइन दीज बोथ, व्हाट डू यू गेट एज अ फाइनल इक्वेशन? You get resistance is proportional to L and inversely proportional to A. And to remove the proportionality, what do? We introduce a constant. Right, like last time to remove the proportionality, we introduced a constant called resistance. This time we introduce a constant uh, which is represented by the symbol rho. Okay, and this is the constant of proportionality, and it's called the electrical resistivity of the material of the conductor. So rho is actually the resistivity of the conductor. The SI unit of resistivity is ohm meter. Okay, so this is very easy to derive. R is equals to rho L upon A. R की यूनिट ओम हो गई, L की यूनिट हो गई M, यानी कि मीटर्स, एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। ओके, सो मीटर और मीटर स्क्वायर अगर आप कट कर दोगे तो डिनोमिनेटर में सिर्फ मीटर बचेगा, एंड यू टेक इट हियर। ओके, सो रोज यूनिट बिकम्स ओम इनटू मीटर, राइट, विच इज ओम मीटर। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल से हमारी रेजिस्टिविटी तय होती है। The metals and alloys have low resistivity in the range of 10 to the power of minus 8 ohm meter टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 ओम मीटर। तो जो अलॉयज होते हैं और कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी यूजुअली कम होती है। सो दे आर गुड कंडक्टर्स और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजी, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी सॉरी लो होती है, राइट? They are good conductors of electricity. Insulators like rubber and glass have resistivity of the order 10 to the power of 12 to 10 to the power of 17 ohm meter. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी resistivity is significantly higher, and these are poor conductors of electricity. Both the resistance and resistivity of a material vary with temperature. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज होती रहती है।
ओके, तो यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है which gives the values of resistivity of an alloy, and it shows that an alloy the resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals. Alloys do not oxidize readily at high temperatures. For this reason they are commonly used in electric heating devices. तो हम ये देखते हैं कि alloys की resistivity generally उसके constituent इंडिविजुअल कंडक्ट मेटल कंपोनेंट से ज्यादा होती है। जैसे कि मान लो आपका कांस्टेंट 10 है, इट इज मेड ऑफ कॉपर एंड निकल, इसकी रेजिस्टिविटी इज हायर देन बोथ कॉपर एंड निकल। ओके, सो दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, बट इन हीटिंग डिवाइसेस वी यूज अलॉयज। व्हाई? बिकॉज हीटिंग डिवाइसेस में जो भी आपका कंडक्टर है वो हीट हो जाता है, राइट? जैसे आप घर में हीटर्स चलाते हो तो उसमें एक कॉइल होती है, वो हीट हो जाता है, राइट? और टू to enable it not to melt at higher temperatures, we use alloys, right? क्योंकि वो higher temperatures पे burn नहीं होता, right? It does not oxidize, and that's why we use it in heating devices like electric iron या toasters. Tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulb. Filament जो भी आपके बल्ब होते हैं, येलो कलर के बल्ब होते हैं, उसमें एक फिलामेंट होता है, आपको दिखता होगा, that is made of tungsten, whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission wires. जो आपकी वायर्स घर में यूज होती हैं जिसमें करंट आता है, those are made of either copper or aluminium, right? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दी हुई है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, एंड यू कैन सी दैट इंसुलेटर्स की बहुत हाई है, alloys की फार लोअर देन इंसुलेटर्स, और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, राइट? तो मूविंग ऑन, लेट अस सी some examples here. कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm? Okay. How much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater is 100 volt? तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले हमें बताना है कि कितना करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करेगा, और फिर सेकंड केस में कितना करंट इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ करेगा। हमें दिया क्या क्या हुआ है? वी आर गिवन the potential difference, which is V is equals to 220 volts. We are given the resistance in the first case of an electric bulb, which is 1200 ohms. And what do we have to calculate? Current, right? तो हमें पता है फॉर्मूला V is equals to IR. तो I कितना हो जाएगा? V upon R, right? V हमें कितना दिया है? 220 volts, और R हमें कितना दिया है? 1200 ohms. तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो your answer would be 0.18 amperes, right? Do not forget to write the units. ओके, सेकेंड केस में हम क्या देखते हैं कि अगर हम सेम सोर्स लें 220 वोल्ट्स की, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट्स, लेकिन अगर हमारा रेजिस्टेंस इज लोअर, राइट, इट्स ओनली नाउ 100 ohms, तो हमारा करंट कितना होगा? अगेन आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। तो वी हमारा है 220 एंड आर हमारा है 100। 220 डिवाइडेड बाय 100 इज 2.2 एम्पियर्स, राइट? सो वेरी सिंपल। Next example, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volts when it draws a current of 4 amperes from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volts? Okay, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा? V is equals to 60 volts. जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है? I is equals to 4 एम्पियर। हमें ढूंढना क्या है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर देते हैं टू 120 वोल्ट्स, तो हमारा करंट कितना होगा वो हमें ढूंढना है, राइट? तो पहले हम क्या करते हैं, टू फाइंड आउट हाउ मच करंट विल फ्लो वी नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, कैसे आएगा? P इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आर कितना हो गया? V डिवाइडेड बाई आई, ठीक है? और V हमारा कितना है? 60, और I कितना है? 4। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया? 15 ohms. Now, you know that resistance is always constant. Okay, it is the constant of proportionality, right? तो ये हमेशा 15 ohms ही रहेगा। अब सेकंड केस में हम देखते हैं कि जब हमारा वोल्टेज 120 है तो हमारा करंट कितना होगा? तो करंट की का फॉर्मूला क्या है? V अपॉन R। V हमारा सेकंड केस में कितना है? 120। अब R कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा। R सेम रहेगा दोनों केस में? यस। व्हाई? बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो 120 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर्स। ओके, सो दिस इज योर आंसर।
Next question. Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohms at 20 degrees. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Using table 11.2, predict the material of the wire. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? 1 मीटर लेंथ हमें लेंथ दी है. ओके, एल विच इज 1 मीटर. हमें रेजिस्टेंस दिया है आर विच इज 26 ओम्स. ठीक है, हमें डायमीटर दिया है विच इज 0.3 mm. क्योंकि हमें डायमीटर दिया है इसका मतलब हमारी वायर सर्कुलर है, राइट. और हमें क्या ढूंढना है? हमें रेजिस्टिविटी ढूंढनी है, हमें ढूंढना है रो. तो हमारा फॉर्मूला क्या था? आर इज इक्वल्स टू रो into length upon area, right? So this would translate into rho is equals to r into area upon length, right? अब हम हमें r दिया है क्लियरली, हमें l भी दिया है क्लियरली, लेकिन हमें एरिया नहीं दिया, राइट? तो एरिया हम कैसे ढूंढेंगे? हमें पता है कि हमारी वायर सर्कुलर है, राइट? और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई इंटू आर का स्क्वायर. हमें आर दिया है क्या? हमें आर नहीं दिया, हमें क्या दिया है? डायमीटर. सो डायमीटर, अगर डायमीटर दिया है तो आर कितना होता है? आर इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, राइट? तो 0.3 अपॉन 2 इज 0.15, राइट? तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल्स टू, सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये डायमीटर दिया है वो मिलीमीटर्स में दिया है और जो लेंथ दिया है वो मीटर्स में दिया है, राइट? तो आपका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. ठीक है, बिफोर यू बिफोर यू पुट इन द वैल्यूज इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट योर रेडियस इनटू मीटर्स. ठीक है, तो एक मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power of minus 3 meters. Okay, so your radius would be 0.15 into 10 to the power of minus 3 meters. Okay, so your area would be A is equals to pi into 1.5, sorry, 0.15 into 10 to the power of minus 3 ka square, right? And this value you can put in the formula. So your rho would be R, which is 26, into A, which is 0.15 into 10 to the power of minus 3 square into pi, which is 3.14, right, divided by your length, which is 1 meter. And when you calculate this, आपका कितना आंसर आएगा? 1.84 into 10 to the power of minus 6 ohm meters. Okay, do not forget the units. I'm telling you repeatedly. And if you solve through uh, um, mathematical equation, you will get the answer as 1.84 into 10 to the power of minus 6 ohm meter. Okay, next example. A wire of a given length having a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance 4 ohms. What would be the resistance of the length, or what would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section as 2A? तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? मटेरियल की लेंथ है L और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A. तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R1 is equals to, let's say this is for the first conductor, R1 is equals to rho into L upon A, right? और ये हमें कितना दिया हुआ है? 4. ठीक है, अब हमारा सेकेंड केस में क्या है? R2. ठीक है, यहाँ पे हमें पहले केस में लेंथ दी थी L और एरिया दिया था A. सेकेंड केस में हमें लेंथ कितनी दी है? L upon 2 एंड एरिया इज 2A, राइट? तो R2 कितना हो गया? 1 upon 4 into रो L upon A. रो L upon A कितना है हमारा? You can get it from here. रो L upon A is equals to 4. तो हम लिख सकते हैं R2 is equals to 1 upon 4 into 4, which is 1. Right? So your answer is 1 ohms. 1 ohm. Okay, so let's quickly do these questions. On what factors does the resistance of a conductor depend? So it depends on the length of the conductor, on the length of the material,
on the thickness of the material, on the property of the material itself, and given that temperatures are constant. Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? Of course, the current flows more easily through a thick wire. Why? Because the resistance is inversely proportional to the cross section area, right? The length of the resistance, let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference across two of the components decreases to half of its former value. What change will be observed through the current? तो अगर मान लीजिए हम resistance को constant रखते हैं and we reduce the value of the voltage or the potential difference by half, how will the value of the current change? So like, let's say initially what we had was R is equals to V1 upon I1, right? And in the second condition, since the resistance is same, we have R is equals to V2 upon I2, right? Now what we are seeing is that V2 is actually V1 upon 2y, because V2 is half of the initial potential difference. So instead of V2, what we can do is we can write R is equals to V1 upon 2 into I2, right? So I2 becomes how much? V1 upon 2R, right? And V1 upon R kitna hai? V1 upon R is actually I1. So what does this imply? That I2 is equals to I1 upon 2. And this is an easy derivation. Why? अगर आप voltage को half करोगे तो current भी half होगा. If you half the voltage, the current will also be half, right? Why are coils of electric toaster and electric irons made of alloys rather than pure metals? Because they do not oxidize and burn, right? Use the data in the table 11.2 to answer the following. Which among iron and mercury is a better conductor? And second, which material is the best conductor? So let's look at that table and decide. So between iron and mercury, which is a better conductor? Iron is a better conductor. Why? Because it has lower resistivity. And which is the best conductor? It's silver. Why? Because it has least conductivity, right? So these are the answers to the questions. And let's end here. We'll start from resistance of a system of resistors in the next session. Uh, if you have any questions, you can comment in the comment section and I'll answer them. Please do not forget to like and subscribe and support the channel. Thank you. Have a good day. Bye bye.